data science, what is actually R, and we will be talking about the basics of R. And this field is too much important in the context of the newly emerging fields that's coming forth, and in recent days, this is a hot topic. Data science is actually the science which uses computer science, statistics, machine learning, visualization, and human computer interaction. Human computer interaction. So this is the combination of all. So it will use computer science, it will use statistics, it will use machine learning, it will use visualization and computer human interaction. You name the things and you can add this to the list. So this is actually collect, clean, integrate, analyze, visualize, and interact with the data and create data products. So actually it is we will be dealing with the data and the data products. So this is actually what we deal in the data science. So data is important, and we have enormous data we got in the form of sequences, in the form of and specifically after next generation sequencing and the high throughput sequencing, we got enormous data, and that data needs to be analyzed. So data science is there are different terminologies that we do use in data science, in data science structure. So there are different terminologies that we use, and one of the terminology is vector. So what is vector? Vector is actually the simplest type of data. Simplest type of data is vector. And what is vector? Actually, it is one-dimensional representation of a string of similar entries. So this is one-dimensional representation. Please keep in mind, it is one-dimensional representation. Like if it is one-dimensional representation, and that one-dimensional representation is string of, so we already have talked about the difference between a string and a sequence. So it is one-dimensional representation of string of similar entries. So similar entries means, so like if we have a vector, like if we name it A, so A is equal to 1, 5, 7, 10, etc. Like this is a vector. Now this is a vector. So A is a vector, is one dimensional, and is a string, and these entries, these are the entries, these are similar entries. So so this, if we have similar entries, string and one dimensional, we will be called that as a vector. And example of vector is, for instance, A is equal to Kolkata, Rome, New York, London, Melbourne. If we have a bracket, and if you can see that these are in parentheses, so this is one word, so this has been taken into parentheses. So this is A is equal to this one. So all these will be taken into parentheses and the commas, inverted commas. So the parentheses and the inverted commas. So these all for the New York, London. So it will take A is a vector. So our program will take A is as a vector, and these are the Kolkata, Rome, New York, London, Melbourne. There will be different entries within this vector. So this represents a series of strings, and that is names of cities, or B is equal to 2, 3, 4, 5, and they are representing a series of numbers. So these are two different types of vectors. If you can see, they are similar entries. So this is they have, this vector has similar entries. This vector has similar entries. And if we compare this with a list, so from comparing it with the list,
we can differentiate between the vector and a list. So a list is actually one dimensional. Again, the same property. It must be one dimensional, but it consists of a mixture of different types of data. For example, C is equal to 2 and then inverted commas and then lengthen inverted commas and then yes. So in this example, this is an example of a list, and a list one that contains a number. This is a number, this is a string, and this is a logical argument. So these are three different types of entries. So they are different types of entries. They are not similar entries. Therefore, C will be called as list and could not be called as vector. We cannot call C as vector. We will call this as list. And third is, Kalim, I will repeat, but once we complete this slide, don't you worry. So a matrix is two-dimensional, at least n-dimensional, two-dimensional that contains one type of data in it. So matrix is different from the vector, that a matrix could be two-dimensional. So if we have a matrix, so it will have it will be two-dimensional, like 3, 5, and this is 7, and this is 9. So that is two-dimensional. So that will be two-dimensional, and it will contain only one type of data. So the type of the data will be same, like it will be like the string and the names of cities, are the series numbers, are logical arguments, and that will be, but that will be two-dimensional. So there is a difference between vector and matrix. The vector will be one-dimensional, matrix will be two-dimensional, and rest of the things will be same. And what is actually a data frame? A data frame is actually two-dimensional, means that will be just like matrix, and entity that contains mix of different data types. So the data types will be different. So that will be just like a list containing different types of data. Data types different, but that is two-dimensional. So we can compare vector with list, with matrix, and with data frame. So a matrix and data frame are two-dimensional, list and vector are one-dimensional. So vector is contains similar entries, list contain different entries, mixture of different entries. Matrix contain single type of data or simple single entries, and the data frame contains mix of data types or multiple type of data entries. Am I clear? Yes, sir. Who will explain? Yes, sir. सर मैं करूँ? She, please. सर अभी तक हमने ये पढ़ा है डेटा साइंस में कि ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करके डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर बन के इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, विजुअलाइजेशन, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको हम मिक्स करके डेटा साइंस को स्टडी करते हैं। अब इसमें डेटा स्ट्रक्चर को देखने के लिए सबसे पहली जो टाइप आती है वो वेक्टर की है। वेक्टर में क्या होता है कि ये वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसके अंदर जो डाटा की टाइप्स है वो सिंपलेस्ट टाइप होगी और इसके अंदर एक ही टाइप का डाटा होगा। और इसके अगर हम कंपैरिजन में देखें लिस्ट, तो लिस्ट भी जो है वो वन डायमेंशनल होती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स का डाटा होता है। थर्ड जो आ जाती है हमारे पास वो मैट्रिक्स की आती है। मैट्रिक्स टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी इसमें टू डायमेंशन में हमें डाटा मिलेगा और इसके अंदर भी जो है लेकिन वो डाटा एक ही टाइप का होगा, यानी अगर किसी सिटी का नेम है तो सारे सिटीज़ के ही नेम होंगे। और फोर्थ टाइप जो आती है वो डाटा फ्रेम की, वो भी टू डायमेंशनल, लेकिन इसके अंदर जो है वो मिक्सचर्स हो सकते हैं डिफरेंट डाटा के, लाइक हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं, साथ कोई सिटी का नेम भी हो सकता है। तो इस तरह से दो डिफरेंट मिक्सचर हो सकते हैं डाटा के, तो उसमें हम जो है वो डाटा फ्रेम कहेंगे। जी जी बिल्कुल, exactly. Okay, who will explain next?
Pfizer is there, Pfizer? Okay. सर मैं कर दूं? जी शफीक आप कर दो. Pfizer has problem with the mic. Okay, no problem. ओके सर. सर हमने अभी देखा कि जो डिफरेंट हमने टूल्स यूज करने के बाद हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा आ जाता है. जिस तरह हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा डाटा उसके बाद हमारे पास आना शुरू हो गया. अब इन डाटा को एनालाइज करने के लिए हमें कुछ डाटा स्ट्रक्चर चाहिए और एक पूरा डाटाबेस जैसा डाटा बैंक बनते हैं. उस तरह हमें उसके अंदर डाटा को फीड करने के लिए एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप है. एक वेक्टर है, एक लिस्ट है, एक मैट्रिक्स है, एक डाटा फ्रेम है. जो वेक्टर है उसके अंदर जो डाटा होता है वो इन वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है और वो स्ट्रिंग होती है सिमिलर एंट्रीज की. स्ट्रिंग मतलब उसके अंदर जो एंट्रीज होंगी वो रैंडम होंगी, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होगा. अगर हम कोई नंबरिंग दे रहे हैं 1 5 7 8 10 11 तो ये रैंडम बेसिस पे है, इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है. लेकिन वेक्टर के अंदर जो डाटा होगा वो सिंगल एंटिटी होगी, या तो वो न्यूमेरिक होगी या तो वो लाइक नेम ऑफ सिटी या किसी भी स्ट्रेन के नेम हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं. लेकिन जो लिस्ट होती है उसके अंदर वो भी वन डायमेंशनल होती है लेकिन उसके अंदर मिक्सचर आ जाता है डाटा के. उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेन्स के नेम आ सकते हैं एंड उसके अंदर डिफरेंट न्यूमेरिक्स आ सकते हैं. तो इस तरह हो सकता है. एंड उसके बाद आता है मैट्रिक्स एंड डाटा फ्रेम. तो मैट्रिक्स और डाटा फ्रेम के अंदर जो डाटा होता है वो 2 डायमेंशनल की फॉर्म में हम स्टोर करते हैं. और जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो एंटिटी होती है वो सिंपल सिमिलर एंट्री होती है जस्ट लाइक वेक्टर. बट यहाँ पे डायमेंशन डबल होती है, 2 डायमेंशन होती है. और डाटा फ्रेम के अंदर जो एंट्री होती है वो सेम लाइक लिस्ट, बट यहाँ पे डायमेंशन 2 डायमेंशन होते हैं. R. So R is actually a programming language. So a programming language and a software environment. So it will be a programming language as well as a software environment for statistical analysis, graphic representation, and reporting. Now, from now onward, if you are doing some statistical analysis, you can use R. You need to use R now. If you are graphically representing something, some data, like if you want to know to have a graph, bar graph or line graph, so do use R. R has more like coverage and R have more vista in the analysis. So you can use R. And for some reporting of some data, so you can use R. So R was created by Ross Ihaka and Robert Gentleman at the University of Auckland, New Zealand, and is currently developed by the R development core team. So R is from their creator, the person, the people, the two scientists that actually introduced this language, and this was actually before their names. And R is a modern implementation of S. Before this, we have a language, and that was S. And S, if this is a continuation of that, S and means R then. So R, S is a statistical programming language. So this is conventional. So S is a single word and R is also a single word. So that is conventionally it become R, and R is due to the scientist name as well. So the R is the modern implementation of S. So this is actually improved version of S actually. And this programming language was named R based on the first letter of the first name of the two authors, and partly a play on the name of Bell Labs language S. So language S was actually the Bell's Lab language, and that S after that it was like the new language that was the modern to S, and that was named as R. And how to install R. First all the whole class, I will invite the whole class to install R to work on your own computer. You can download it freely from Comprehensive R Archive Network CRAN. You can download from the CRAN site.
So train.rproject.org, and installing studio, so you need to install R, and then you need to install R Studio. So R Studio is an integrated development environment, that is IDE, and it is recommended installing and using R Studio to edit and test your code. So we will be talking about codes in detail, how they work. So you can install R Studio through R Studio website. So this is the website. This is download R Studio from there, download R from there, run this, install this one. And one thing you need to have in mind, you must install R before installing R Studio. So please take a screenshot of this slide, because in the coming class you need to have all these run on your computer, and we will be running codes on this tool. So by running the codes, we will be getting the result. So we will be talking about this all in detail. But before going in the coming sessions, you need to install R and the R Studio in the class. Actually, R works on the principle of function and object. So basically, R is highly functional and ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. सो इसमें हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. लाइक वी विल यूज फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स in R. So in our program we will be dealing with functions and objects. So functions are actually the statements that accomplish a task. Say you have a function for calculating the mean of x, so that it will state mean of x is equal to sum of x divided by length of x. So where mean of x, so this mean in and the parenthesis actually is the function. Sum is actually the function. That sum with parenthesis will be the function, and length with the parenthesis is the function. So that will mean in this case, so the function in this case, in this very specific formula, so that will there are three functions that has been used. First one is the mean. So mean of something and sum of something. So mean of something will be sum of something divided by the length of something. So that means we have three functions in this very formula. And so mean of this, mean, sum and length, they are actually function. So mean is like that is the mean of the values that has been taken as x, and sum is the to sum up all the values that has been taken as x, and length is the all the values that has been taken as x. So and so function is denoted by parentheses. Whatever goes in between the parentheses are arguments. So the arguments are the x is actually arguments, are x is all those things that goes in the parentheses. So in the above example, x is an argument to the function mean. So x is an argument. So x is an argument to the function mean, and x is an argument to the function mean or sum or length. So x is an argument to the argument to the function sum, and here x is an argument to this to the function mean. Sorry, length. So this is how we define function. And R is only object oriented. So object is sorry, R is also object oriented, and that all entries in R are objects. So all entities in R will be objects. Thus if we specify mean x is okay, so we need to know few things in R. In our language, we will be using this sign for equals to. So this and equals to is the same, but people do use
for R, people prefer to use this sign for equals to sign. So we will be using, like, we will be using 3 equals 3, or x equals to, so that will means x is equal to 2 plus 5. So please use to it now that we will be using greater than and this minus sign for to denote is equal to. Am I clear? क्लियर है ये बात क्लास? Yes, sir. Okay, so and here that is mean of x. No, so now we are defining something like mean x. So this is now an object. Mean x is equal to mean of, and so this is now the function. So that is mean of all of this argument. So mean of x is equal to, we have to take the average of x. So mean of mean x, so this is now the word, this is not now the mean of x, this is word mean x is equal to mean of x. So we indicate that means x is an object. So now this mean x is an object. We can name this anything, like we can name it like if I could name it like mean is equal to, like if I say mean of mean a is equal to mean a is equal to sorry, is equal to mean of x. So so the same thing will go here, mean x. So this is just the name that we could give, and this name, well, now this will be called as an object. So we indicate mean x is an object that takes the value of mean of x as denoted by the function mean x. So this will be easy if we go into the practice. And every object has its own properties. Every object has its own properties that can be explored by further functions. So it will be having its own properties explored by the functions. So object, what is object is the stuff that is stored in R. So this stuff that is stored in R is an object, any stuff that's stored in R. If we type a function without parentheses, so if we have a function without parentheses, so if we write mean and that is without parentheses, R shows us the code for that function. Say for instance, I say that x, so mean, I say that mean, sorry, say for instance, mean of x is equal to, mean of x is equal to sum of x divided by length of x. So say for instance, x is equal to, so x is equal to x is equal to 2, 3, so x is equal to 2, 3, and 1. So, and now what will be the mean? The mean will be, so if I, so this will be the x, and this is the function mean x. So if I write just mean, if I write just mean, what is mean actually? So what will be the result? The result will be 3. So because and if I write this mean of x, so that will be the code show that will show us the code for that function. So if we could check it in the, so R will shows us the code for that function, and accessor is a sign. So this accessor sign, this dollar sign, this is accessor sign,
An accessor sign is used to access the data from the columns of the data frame. So that is to extract specific variable from a data frame. So that will mean what this mean actually. So if we have a data frame, that it means we have a table, and in that table we have different variables, and we have and this that means one, that means two number column, this is three, this is four, and this is five. Say for instance, this four is the names of cities. They are cities. So they are the names of cities here: Columbia, US, Columbia, and Manchester, and so on. So these are the names of cities. So, and this table is known as, for instance, we will be talking about, this is the name, and this is for instance, this is the data of murder cases. So this is the table for murders. So this is the data frame. And now if I want to access only this column, so what sign I will use? I will write as murders, and I want to access only this column and only this variable actually. So I will write it as 4. So this is how we can access some variable in the data frame. You already know what is mean by data frame. And after that, vector. A vector is an object containing several entities, like the names of cities, yeah, or the variable. So that is actually a vector. So a vector is an object consisting of several entries, and can be numeric vector. So a vector can be numeric, a vector can be a characteristic vector, or a vector can be a logical vector. So that will mean that a vector can be like, if you can say, a vector can be like, if is x is equal to 1 2 3, 1 2 3, so that is numeric. Or a vector is like yes no, so that is logical. Yes and no, that is logical. And a vector could be also characteristics features, some features about some. So the a vector could be, so this is a vector. So a vector is an object consisting of several entries. So this consists of several entries. So they have several entries. So this is actually a vector. So, and after that, a class is a type of object. So class will be, so if we want to know the class of a vector, so just write class and that vector, and it will show us which class it contains. It is either numeric or characteristic or logical. And relation operator is there, and that is used to ask if it is true or false. For instance, 2 is equal to 3. So this will show the relationship between these two. 2 is either equals to 3 or not. So it will show either it is true or it is false. And these quote signs are used to denote that the entries are characters rather than variable. So if I write, so say for instance, if I write x, and so if I write x, so it will define x as 1 2 5, for instance. So x is equal to 1 2 and 5. So before that, I have defined x as x is equal to 1 2 and 5. And after that, I ask the program what is x. So it answers me 1 2 and 5. But if I write x in if I write x in quotes, what will it answer? It will answer me as x, because it is not now the variable. It is not now a vector. It is the word x actually now. Am I clear or not?
अगर यहाँ तक क्लियर है, so we should go into practice now, and from there you will be clear with everything. अच्छा, अब जिसको जितनी समझ आई है थोड़ा सा मुझे बता दें ये कि कितनी समझ आई इन चीज़ों की, ताकि फिर हम आगे जा सकें. Who will like volunteer to explain? Hijab is there. फायजा कुद्दूस. यस सर. जी फायजा, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें. जी सर. सर मुझे बस ये सेकंड लाइन की समझ नहीं आई, बाकी स्लाइड की समझ आ अच्छा, गई थी. ये फंक्शन और ऑब्जेक्ट से बता दें. ओके सर. जी जी. सर इसमें बताया कि आर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स. मतलब कि जो फंक्शन वो होगा जो हम पेरेंथेसिस के अंदर डिनोट करेंगे. पेरेंथेसिस में जो होगा वो हमारा फंक्शन होगा. और ये हमने इसमें पढ़ा है कि एक मीन हम किस तरह से निकालते हैं. मीन एक्स इज इक्वल टू सम एक्स डिवाइडेड बाय लेंथ एक्स के सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जितनी उसकी लेंथ है उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा. और इसमें फिर यही है कि फंक्शन आर डिनोटेड, फंक्शन को हम पेरेंथेसिस से डिनोट करते हैं. और जो भी हम पेरेंथेसिस के अंदर लिख रहे हैं वो हम उसको आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर है कि मीन एक्स जो है वो आर्ग्यूमेंट है उस फंक्शन का. और सर इसमें आपने बताया कि हम इसको राइट किस तरह से करते हैं कि मीन अगर हम इक्वल टू हमने बताना हो तो हम ग्रेटर का साइन और बार डालते हैं. तो वो हम हमें बता उससे हम इसमें समझते हैं कि वो इक्वल टू कह रहे हैं. और सर ये वाली जो स्लाइड है इसमें ये आपने बताया कि ऑब्जेक्ट स्टफ दैट इज स्टोर्ड इन आर, जो आर के अंदर जो भी स्टोर्ड है वो ऑब्जेक्ट है. लेकिन इसमें ये सेकंड वाली जो लाइन है वो मुझे समझ नहीं आई थी कि इफ वी टाइप एन फंक्शन विदाउट पेरेंथेसिस, अगर हम आपने जैसे पेरेंथेसिस के बगैर कोई भी लिखे थे कि x इज इक्वल टू 2 3 1, और जब आपने उसका मीन लिया तो वो मीन 3 किस तरह से आया था, ये बात मुझे समझ नहीं नहीं, आई थी. ये हम अभी प्रैक्टिकली कर लेंगे, डोंट यू वरी. जो आगे आगे चीजें वो बता दें. और इसमें असेसर का बताया था कि हम उसे डिनोट करते हैं डॉलर के साइन से. और इसमें हमने पढ़ा कि एक डाटा फ्रेम होता है जिसके अंदर अगर हमने असेस करना हो एक कॉलम से डाटा तो हम वो असेस कर सकते हैं. और वेक्टर्स का था कि वेक्टर जो होता है वो सेवरल उसके अंदर एंट्रीज आ रही होती हैं और वो न्यूमेरिक भी हो सकती हैं, करेक्टरिस्टिक वेक्टर भी हो सकता है और लॉजिकल वेक्टर भी हो सकता है. और क्लास ये ऑब्जेक्ट की एक टाइप है. और ऑपरेशनल रिलेशनल ऑपरेटर का आपने यही बताया कि ग्रेटर और इक्वल टू और लेस देन, ये साइन जो है ये हमें बताएगा कि या ये ट्रू है या फॉल्स है. और इसके अलावा एक और भी बात थी पेरेंथेसिस वो. सो ये देखें, इसमें आर में लाइक द फंक्शन विदाउट पेरेंथेसिस, सॉरी वो मैंने 3 लिख दिया था. दिस शोज अगर हम पेरेंथेसिस के बगैर मीन को पेरेंथेसिस के बगैर लिखें सो दैट विल शो द फार्मूला फॉर दैट. जो हमने फार्मूला लिखा था ना, लाइक द सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय लेंथ ऑफ एक्स, सो वो हमें वो कोड शो कर देगा फॉर दैट फंक्शन. वो हमें मीन शो नहीं करेगा, लाइक उसका जो रिजल्ट है वो शो नहीं करेगा. अच्छा, और यहाँ पे ये जो एक्सेसर है इसकी समझ आ गई क्लास को कि लाइक अगर हमारे पास कोई डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम से जस्ट ये समझ लें कि हमारे पास कोई टेबल है जिसमें 2 डायमेंशनल डेटा हो, मीन्स के एक्स एक्सिस में भी डेटा हो और वाई एक्सिस में भी डेटा हो. ठीक है, so that is a data frame. So we already have discussed this data frame in detail previously. So उसमें
कोई भी कॉलम को अगर हमने एक्सेस करना हो, दिस इज अ वेरिएबल, सो कोई किसी भी कॉलम को अगर हमने एक्सेस करना हो, इस पूरे कॉलम को, इस पूरे टेबल के अंदर, सो इस डेटा फ्रेम के अंदर किसी भी वेरिएबल को हमने अगर एक्सेस करना हो, सो वी विल यूज this dollar sign, and this dollar sign will be called as accessor. So the data frame accessor, and then we will be use this variable, ये कोई भी variable होगा ये इसका, तो हम वो use करेंगे. And after that, this sign shows to let us know that either two things are equal or not. So it will give us the result, like logical result, like it will show us like is true or false. And what quotes means, so these quotes are for used to denote the entries or characters, कि ये entries जो हैं ये characters हैं rather than variable. Like अगर मैं इस तरह use कर रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि x is equal to x is equal to 5, 4 and 6, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सो मीन, और सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जस्ट अगर मैं इसको लिख दूँ x, जस्ट मैं इसको इसमें इन्वर्टेड कॉमास में वो कर दूँ, अगर मैं x लिखूँ तो वो मुझे ये शो करेगा, लेकिन अगर मैं इसको कॉमास में बंद करूँ तो रिजल्ट क्या शो करेगा, मुझे रिजल्ट x आएगा. ये मीन्स कि जस्ट ये वर्ड x आएगा. सो दिस मीन्स दिस वर्ड x, this will not mean some numeric data. समझ आ रही है? Am I clear? Yes, sir. So it's now turn for the practical. So please, Shafiq, if you can share the slide. Okay, sir. Um, okay, so now you can share. So this is actually the art that has been shown, this tool, and you can see here, this is console. You can write here, you can show, and this will show the result like here and here. You can use all of this environment as well. So now if you could write, like say for instance, wait. So x is equal to, यहाँ लिखें x is equal to, no, this is not is equal to. We will never use this equals to sign. X greater than dash नो ये बाकी डिलीट कर देना, सिर्फ x इज इक्वल टू लिखते हैं. ये लेस देन का निशान डिलीट करें, हाँ ये भी माइनस भी डिलीट करें, बस. दिस विल मीन x इज इक्वल टू. अब स्पेस अगर दे दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, x के बाद स्पेस दे दें ताकि जस्ट फॉर क्लैरिटी, x के बाद इज इक्वल टू से पहले, हाँ x के बाद, यस. सो इस स्पेस, ये स्पेस अगर दे दें या ना दें तो, लेकिन हमारे क्लैरिटी के लिए अब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो लाइक यहाँ भी स्पेस दे दें एक, हाँ यस. अब c लिखें, c एंड ब्रैकेट लिखें, ब्रैकेट स्मॉल पैरेंथेसिस शुरू करें, हाँ एग्जैक्टली. अब आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट, मैं जस्ट चाह रहा हूँ कि स्लाइड्स में जो है वही कर लें,
31 लिखें, 31 कॉमा 4 कॉमा 15 कॉमा 92 कॉमा 65। हाँ, अब ये देखें, ये कॉमा के बाद स्पेसेस डाल दें फॉर क्लैरिटी। ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग, तो हम जिस तरह राइटिंग करते होते हैं, हाँ एग्जैक्टली। सो एंड 15 से पहले भी, यस एग्जैक्टली। हाँ, अब जो पेरेंथेसिस के बाद इंटर प्रेस करें, प्रेस इंटर। सो अब आपने क्या करना है, ये कह रहा है असल में हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू, इसको कहा कि क्रिएट करो, C फॉर क्रिएट, क्रिएट करो 31 4 15 92 एंड 65। सो लेकिन ये अब क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज नॉट इंटरप्रेटेबल एज अ फैक्टर, ये C को स्मॉल c लिखें। अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एरो की से जाएं, ठीक कर दिया आपने, और C को स्मॉल लिखें। अब इंटर प्रेस करें, इंटर प्रेस करें। हाँ, अब देखें ये हो गया। अब आपको यहाँ पे ये वैल्यू नजर आ रही होगी, ये उसमें नजर आ, हाँ एग्जैक्टली दिस वन। सो दिस मींस न्यूमेरिक है, ये x जो है वो न्यूमेरिक है, NUM लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें 31 4 15 92 और 65 लिखा हुआ है। सो x इज इक्वल टू 31 4 15 92 एंड 65, ठीक है। सो अब हमारे पास, हमने x को डिफाइन कर लिया है, ठीक है, क्रिएट कर लिया है ये, ओके। एंड अब इसके बाद हमारे पास, हाँ, अब आपने क्या करना है, मीन ऑफ x को डिफाइन करना है। मीन यहां पे लिखे, मीन, मीन, हाँ एग्जैक्टली, क्लिक करें, ठीक हो गया। मीन इज इक्वल टू, हाँ मीन ऑफ x, ठीक है, ठीक है, x लिखें, हाँ इज इक्वल टू, ठीक हो गया। हाँ, मीन ऑफ x इज इक्वल टू सम ऑफ x, सम, और फिर ब्रैकेट पैरेंथेसिस में x, और फिर डिवाइड बाय, स्लैश लिखे ना, हाँ ठीक है, लेंथ ऑफ x। तो स्पेस देनी है कि नहीं? नहीं नहीं, स्पेस ना दे, स्पेस दे या ना दे कोई इशू नहीं है, लेंथ x। प्रेस करें, x इज दैट फाउंड। सॉरी, यहाँ पे मीन x लिखें, मीन x लिखें, जस्ट मीन x, नहीं ये, हाँ सिर्फ मीन x लिखें, बस ये, हाँ ये इंटर प्रेस करें, एरर आ रहा है, चले चले, फर्स्ट वी विल डू some more things and we will come towards this। आपने यहाँ पे, अब आप लिखें सॉर्ट, चले अब अनशेयर करें, अनशेयर करें, कुछ चीजें हम डिफाइन करने और उसके बाद इस पे आते हैं। सो अच्छा, उसमें आप, अच्छा हमने यहाँ पे एक और बात की भी बात की थी, क्लास, लेकिन चलिए उसको करते हैं। उससे पहले हम ये देख सकते हैं कि इंडेक्स x जो है, इसको हमने डिफाइन करना इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x। सो ऑर्डर का क्या मतलब है, इंडेक्स, सो ऑर्डर इज, ऑर्डर ऑफ x इज द इंडेक्स दैट पुट्स द वेक्टर x इन ऑर्डर।
सो ये इसका इंडेक्स है जिसने वेक्टर, अच्छा हमने ये लिखा था ना, x इज इक्वल टू सी क्रिएट 31 4 15 92 एंड 65। फिर हमने ये देखा कि व्हाट इज x, सो x इज इक्वल टू 31 4 15 92 एंड 65, इसका ये रिजल्ट आना है। अब सेकंड हम ये कर सकते हैं कि सॉर्ट x कर दें, ठीक है। सॉर्ट x जब करेगा तो इसने हमें इसको तरतीब से लिख देना है, सो इट विल मेक इट इन ऑर्डर 4 15 31 65 एंड 92। सो इसको ये ऑर्डर इसका नहीं है, सो इसने एक तरतीब में इसको सॉर्ट कर देना है। एंड व्हाट इज एक्चुअली ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? सो ऑर्डर, वेल ऑर्डर इज एक्चुअली द इंडेक्स। सो ये 31 कितने नंबर पे है? दिस इज एट this should be at ये 31 का जो इंडेक्स है ये सेकंड है, 4। अच्छा, what this means, 2 so previously, so rank is actually ranking, this is like ये इसका order is the index that puts the vector x in order। इसने इसको order में कर देना है। so order, this is a 2 number 31 को 2, ये 2 number जो है, second number is 2 is 4, so 4 is here। फिर उसके बाद third number आएगा, third number is 15। फिर one number is 31। फिर उसके बाद fifth number is 65। and फिर उसके बाद fourth number is 65, sorry 92। so ये जो है ये उसको order में कर देगा, sort कर देगा। so sorting is actually keep all this in a specific order, in a specific sequence, in like this is in ascending order, ठीक है। अब ऑर्डर एक्चुअली क्या है? ऑर्डर वो सीक्वेंस है जिसमें ये असेंडिंग ऑर्डर में किया जाएगा। लाइक सबसे पहले ये सेकंड नंबर वाला आएगा, and then after that there will be the third number, after that this will be the first one, the fifth one, and after that the fourth one। so this is actually the index, इसका जो इसके पीछे जो इंडेक्स है, like जिसकी वजह से ये ascending order में आया है, so this is actually that thing। and what is actually rank? Rank is actually this actual thing, like this should be at third number, ये देखें, this should be at first number, this should be at second number 15, and this should be at fifth number, and this should be at fourth number। so it is the actual rank of this thing। and if we write index is equal to order x, index अगर हम define करें कि index को define करें कि order x कर दें, ठीक है, तो ये हमें ये देगा 2 3 1 5 4 कि इसका जो पीछे इंडेक्स है, लाइक ये हमें इंडेक्स को डिफाइन कर देगा, लाइक हाउ इट शुड बी रिटन एक्चुअली, ठीक है। इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो उसका जो एक्चुअल इंडेक्स है वो हमें ये शो कर देगा। so it is actually order x is actually the index that puts vector x in order, ठीक है। so and after that, so this is how we can differentiate between sort, order, rank, and and this is the order is the index to obtain sorted data। sorted data हमारे पास जो आ जाए तो उसका actually index है। so 4 is actually at second position, 15 is actually at third position, and in actual, and 31 is actually at the first position। so this is how the order is, and the response of sort x and sort order x will be the same। we will be doing this in detail। so this is the original,
This 31, 4, 15, 92, and 65. This is the sorted data. So this is an ascending order, like 4, 15, 31, 65, and 92. And this is the order. Order is actually the index of this. So this the index of this sorted data. So order is the index of sorted data. So 4 is at second position, 15 is at third position, 31 is at first position here in the original, 65 is at the fifth position in the original, and 92 is at the fourth position in the original. And what is actually rank? Rank is actually the original the position of original data. So in this sorted thing, when it is sorted, so this one is at number 3 position, this fourth one is at number 1 position, and this 31 is at so this 15, sorry, 15 is at the second position here, and this 92 is at fifth position here, and 65, this 65 here is at fourth position here. So this is all about how it is sorted. So order is the index of the sorted data, and rank is the index of the original in the sorted data. Am I clear? So now Shafiq, please share the slide. Yes, sir. Okay, so now we have defined x is equal to, so we have created 34 31, 4, 15, 92, and 65. So Yes, sir. first just write x equals to sorry, x इंटर प्रेस करें. So why it is so? अब एक काम करें, अब कैपिटल पे ट्राई करें. कैपिटल, हाँ आपने कैपिटल किया हुआ ना, एग्जैक्टली, Yes, sir. यस Yes, यस sir. आपने कैपिटल किया हुआ है. सो कीप इन माइंड द कैपिटल एंड द स्मॉल लेटर्स एक्चुअली, ठीक है. Okay. सो अब हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं 31, 4, 15 एंड 92. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x. सो नाउ आपने एक काम करना है, आपने ये करना है कि सॉर्ट x करें, सॉर्ट x. प्रेस इंटर करें, नहीं प्रेस इंटर करें, नहीं Okay, sir. कैपिटल Okay, एक्स, sir. सॉर्ट कैपिटल एक्स जी. Okay, sir. हाँ अब देखें, ये इसने ये डेटा जो है 31, 4, 15, 92 इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है. 4, 15, 31, 65 एंड 92 इन द असेंडिंग ऑर्डर. नाउ राइट, अब आपने क्या करना है, इसका जो ऑर्डर है वो लिखना है, ऑर्डर एक्स करें. ऑर्डर एक्स जो है, ऑर्डर, यस एग्जैक्टली, एंड एक्स कैपिटल एक्स. सो इसका ये इंडेक्स दे देगा कि ये 4 जो है ये सेकंड नंबर पे था ओरिजिनल में, 15 जो है ये थर्ड नंबर पे था, Yes, sir. 31 जो है ये फिफ्थ नंबर पे था, सॉरी 1 नंबर पे First था, number. ये फर्स्ट नंबर पे. 65 जो है ये फिफ्थ नंबर पे था, एंड 92 जो है दैट वाज ऑन द सेकंड नंबर. Fourth number. ठीक है. अच्छा अब आप एक काम करें, अब राइट rank x. So to have the rank of original data in the sorted data. ठीक है. That's now it shows that in the sorted data at position 3, 31 will be at position 3, this 31 will be at position 3, 4 will be at position 1, 15 will be at position 2, 92 will be at position 5, and 65 will be at position 4. So this is how we can rank. So these are the different functions that we need in our data actually. And next is write index is equal to order x. Okay, sir.
स्पेस देनी है इसके बाद, स्पेस दे दे या ना दे, कोई स्पेस से फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर, यस एग्जैक्टली, और कैपिटल एक्स, हाँ ठीक है, प्रेस एंटर करें। अब जो है ना, जस्ट अब ये लिखे ऑर्डर, अब इंडेक्स लिखे। अब इंडेक्स हमें ये डिफाइन कर, आपने डिफाइन कर दिया है ना कि इंडेक्स जो है वो ऑर्डर एक्स के बराबर, ऑर्डर एक्स हो। तो अब हम इससे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज इंडेक्स देन। इंडेक्स इंटर प्रेस करें। एक्स डालना कि वैसे? नहीं नहीं, आपने नहीं डालना, अब जस्ट हमने इंडेक्स को डिफाइन कर लिया ना। तो Okay, sir. देखें, देखें अब ऑर्डर एक्स ऊपर इसने डिफाइन किया हुआ था, ऊपर हमने देखें ऑर्डर एक्स को लिखा था 2 3 1 5 4 लिखा था ना ऑर्डर एक्स। अब हमने इस पूरे फार्मूला को एक नाम दे दिया है, इंडेक्स का नाम दे दिया है। तो हम अब इससे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज इंडेक्स, तो वही पूरा जो इंडेक्स एक्स है वो हमें ये दोबारा दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बार इंडेक्स को सॉर्ट के इक्वल करके चेक करें फॉर प्रैक्टिस। जी जी एग्जैक्टली। सो आफ्टर दैट, ठीक है ठीक है, अब अनशेयर कर दें प्लीज। क्लासेस की समझ आ गई है? तो इसकी समझ आ गई है क्लास? यस सर। ओके ओके, ठीक हो गया। सो एंड हु विल एक्सप्लेन, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि, ओके यू आर टाइपिंग, यस ओके ठीक है, थोड़ा सा कोई कौन एक्सप्लेन करेगा? शफीक आप कर दो, आपने प्रैक्टिकली कर लिया है। सर इसमें जी हमने जो डिफरेंट अपना डाटे को जो था उसको पहले क्रिएट किया डाटा, उसके बाद उसको सॉर्ट, ऑर्डर और रैंक में हमने उसको डिफरेंट डिवाइड किया। सबसे पहले हमने अपना जो डाटा था एक्स को क्रिएट किया बाय इनपुटिंग सम नंबर 31 4 15 92 65। उसके बाद हमारा जो आर्ट स्टूडियो में हमारा डाटा क्रिएट हो गया जो ये फर्स्ट लाइन में शो होगा। उसके बाद हमने जो कमांड दी सॉर्ट की, उसने उस डाटा को सॉर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, यानी 4 15 31 65 एंड 92। देन उसके बाद हमने जब ऑर्डर की कमांड दी तो वो हमें ओरिजिनल डाटा में बताएगा कि जो सॉर्ट था वो कहाँ पे, जो नंबर 4 था वो कहाँ पे था, और जो नंबर 15 था वो कहाँ पे था। जो जिसका एम है कि सॉर्ट में नंबर 4 जो है वो ओरिजिनल डाटा में सेकंड नंबर पे था, उसने वहाँ पे सेकंड नंबर शो कर दिया। इसके बाद जो 15 था वो ओरिजिनल डाटा में थर्ड नंबर पे था, उसने ऑर्डर को थर्ड नंबर पे शो कर दिया। एंड इसके 31 जो था वो फर्स्ट नंबर पे था, उसने ऑर्डर में उसको लेटर 1 से डोनेट कर दिया। एंड 65 नंबर 5 पे था ओरिजिनल पे, उसको 5 एंड 92 को 4 कर दिया। इसके बाद सर हमने उसको रैंक किया। रैंक में उसने हमें डाटा शो किया। सर ये रैंक तो एक बड़ी बता दीजिएगा इसका नहीं। सर रैंक एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा, वो भूल गया। सो रैंक जो है ना, देखें सॉर्ट और सॉरी सॉर्ट हमें क्या, अच्छा अब देखें इसको स्टार्ट से देख लें। सबसे पहले हमने x को डिफाइन किया कि व्हाट इज x, तो हमने लिख दिया कि x इज इक्वल टू दिस दिस एंड दैट वन। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज का याद रखें कि ये स्पेसिस अगर ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो इससे फिर हमने पूछा कि व्हाट इज x, सो इसने ये जवाब दे दिया कि ये असल में ये जो पैरेंथेसिस में ये शो कर रहा है ये हमें आंसर में ये देगा, ये ब्लू कलर में। सो ये जो आंसर में देगा इस दिस शोज लाइन नंबर, तो इसको इग्नोर करें, दिस वन को इसको इग्नोर करें। एंड अब यहाँ पे हमने इससे पूछा कि व्हाट इज x, सो इसने x को डिफाइन किया कि वी हैव डिफाइंड x एज 31 4 15 92 एंड 65 दैट वी हैव क्रिएटेड दिस वन, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम सॉर्ट करें, लाइक इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें,
तो इसमें इसको इस पूरे सेट को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। नाउ अब हम इससे पूछना चाह रहे हैं कि इसका इंडेक्स बता दें, सॉरी ऑर्डर बता दें। ऑर्डर इज एक्चुअली द इंडेक्स। सो इसके पीछे जो काम चल रहा है इसका इंडेक्स है, और वो इंडेक्स क्या है, वो इस सॉर्टेड डेटा का इंडेक्स है। मींस के ये सॉर्टेड डेटा जो है इसमें ये जो 4 लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल डेटा में ये कहाँ पे मौजूद है, तो ये ओरिजिनल डेटा में 2 नंबर पे मौजूद है, ये ओरिजिनल डेटा में 3rd नंबर पे मौजूद है, ये ओरिजिनल डेटा में 1st नंबर पे मौजूद है, ये ओरिजिनल डेटा में 5th नंबर पे मौजूद है, ये ओरिजिनल डेटा में 4th नंबर पे मौजूद है। अब अगर हम रैंक को देख लें, इस रैंक को जस्ट देख लें, रैंक भी इस सॉर्टेड डेटा को ही देखता है, लेकिन वो एक्चुअली इसका इंडेक्स है। ठीक है, तो वो ये बताता है कि 31 जो है वो सॉर्टेड डेटा में 3rd नंबर पे मौजूद होगा, 4th जो है वो इस सॉर्टेड डेटा में 1st नंबर पे मौजूद है, 15 जो है इस सॉर्टेड डेटा में कितने नंबर पे मौजूद है, 2nd नंबर पे मौजूद है, और 92 जो है सॉर्टेड डेटा में 5th नंबर पे मौजूद है, और 65 जो है वो सॉर्टेड डेटा में 4th नंबर पे मौजूद है। सो इसमें ऑर्डर में और रैंक में यही डिफरेंस है कि ये इसकी नंबरिंग बताता है और विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वन, और रैंक जो है वो इसकी नंबरिंग बताता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वन। समझ आ रही है? और अगर यस हम सर प्लीज। हाँ, अब हम चाह रहे हैं कि इस बजाय इसके कि हम ये पूरा लिखें हर दफा, तो इसको हम कोई नाम देते हैं। हम इसको कह देते हैं कि इसका नाम हमने रख दिया इंडेक्स, तो हम जब भी इंडेक्स यूज करें तो वो हमें ऑर्डर एक्स दे दें, ये वाला, दोबारा हमें पूरा लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो हम कोई भी नाम दे दें, इंडेक्स दे दें, तो इंडेक्स हम डिफाइन कर रहे हैं कि इंडेक्स इज इक्वल टू ऑर्डर एक्स। सो हम अब इससे पूछते हैं कि व्हाट इज इंडेक्स, तो वो हमें यही ऑर्डर एक्स दे रहा है दोबारा। एम आई क्लियर और नॉट? यस सर यस सर। ठीक है, कौन डिफाइन करेगा? थोड़ा सा डिफाइन कर दें, मुझे अंदाजा हो जाए कि चीज़ें ठीक हैं, ठीक चल रही हैं कि नहीं। कौन करेगा? सर मैं करूँ? प्लीज़ आप करते चलें। सर इसमें हमने सिस्टम को सबसे पहले हमने लिखा है कि 31, 4, 15, 92 और 65 हमने ये सिस्टम को दे दिया और इसको हमने एक्स कहा। फिर जब हमने उसे एंटर किया तो उसने बता दिया कि x क्या है, x 31 है, 4, 15, 92 और 65 है। फिर उसके बाद हमने लिखा सॉर्ट x। अब हमने उसको कहा कि इसको सॉर्ट करके बता दो, तो उसने जो है वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। उसने उस 4, 15, 31, 65, 92 असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स यहाँ पर सॉर्ट कर दिए। उसके बाद हमने ऑर्डर एक्स करना है, तो ऑर्डर एक्स में वो हमें ये बताएगा कि जो 4 हमने लिखा है वो ओरिजिनल डाटा में किस पोजीशन पे था। जैसे 4 यहाँ ओरिजिनल में 2nd पोजीशन पे था तो उसने 2 लिख दिया, और 15 जो है वो 3rd पोजीशन पे था तो उसने 3 लिख दिया, और 31 1st पोजीशन पे था 1 आ गया, और 65 जो है वो 5th पोजीशन पे था तो 5 आ गया, और 92 4th पे था तो 4 आ गया। उसके बाद रैंक जो होता है वो होता है ओरिजिनल डाटा का इंडेक्स। जैसे कि यहाँ पर अगर उसने 3 लिखा है तो वो ये कह रहे हैं कि जो आपने सॉर्ट किया है डाटा, सॉर्ट में 31 जो है वो 3rd पोजीशन पे आ रहा है, और जो उसके बाद हमने 1 लिखा तो 1 सॉर्ट में हमने देखा कि 1 जो है वो 4 को बता रहा था, और उसके बाद 2 जो है वो 2 क्या है हमारे पास। फोर अ, इज एट वन, 4 इज जी एट 1 पोजीशन जी, और 15 जी जो है सर, एट 2 पोजीशन, 92 जो है वो एट 5th पोजीशन, एट 5th पोजीशन। और 65 जो है एट 4th पोजीशन इन द सॉर्टेड डेटा। जी, और फिर जी हमने इसको एक नाम देना है ऑर्डर को, तो हमने जो है वो अगर इंडेक्स इक्वल टू हम ऑर्डर कहते हैं तो वो और उसको फिर अगर हम एंटर करते हैं तो वो वही ऑर्डर हमें दे देता है। हाँ एग्जैक्टली ये इंडेक्स हम इस वजह से यहाँ पे नाम दिया है। नाम किसी भी फार्मूले के नाम को हम नाम दे सकते हैं, लाइक हम ए कह दें इसको, तो नेक्स्ट टाइम हम अगर ए यूज करेंगे तो इस दोबारा पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जस्ट ए लिख देंगे तो ये पूरा फार्मूला इसके बैक पे जो काम चल रहा है वो हमें देगा। ठीक है, लाइक दिस इज हाउ वी कैन मेक थिंग्स इजी। ये तो बहुत इजी है, आगे जाके कॉम्प्लेक्स चीजें जब आएंगी तो उसमें फिर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसको समझ लें कि इसमें वर्किंग, इस लैंग्वेज में वर्किंग किस तरह होती है।
ठीक है, am I clear? Am I clear? यस Class? सर। ठीक हो गया. So in the chat, okay, okay. So coercion जो है integers, इससे पहले जो है integers occupy less space in the computer memory. So people usually actually the computer systems actually they employ integers and because it takes less space. Coercion एक terminology है that is used more often, and coercion is actually the practice of persuading someone to do something by force. हम अगर कोई काम by force करें, किसी को मजबूर करें by force, that is actually coercion. But what is coercion in R? So issues with coercion in R can be avoided by changing the correction to numeric and vice versa. Like this is known as typecasting. So कुछ मसलों कुछ चीज़ें इस तरह आएंगी कि R में like that will be a problem, like we will be talking in detail. लेकिन R जो है वो उन चीज़ों को खुद करेक्ट कर देता है, like टाइप को चेंज करके. like अगर हम लिख रहे हैं कि 1 2 3 और उसके बाद लिख देते हैं कैप, और मीन्स के अब हम इससे पूछ रहे हैं कि ये जो है ये सेट जो है ये न्यूमेरिक है या जो है वो करेक्टर्स हैं. सो इसमें कुछ न्यूमेरिक है और कुछ लाइक हम अगर इसको कह देते हैं x इज इक्वल टू दिस सेट, ठीक है, क्रिएट करें कि ये 1 2 3 4 और हम इससे पूछ रहे हैं कि x जो है वो न्यूमेरिक है या करेक्टर है, टाइप ऑफ x बता दें, तो वो या क्या कहेगा कि न्यूमेरिक है या करेक्टर है. तो इससे बचने के लिए R क्या करता है, इसको कोर्स करता है, coercion, and coercion is all it will convert all these stuff into characters. इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देगा. तो ये न्यूमेरिक से चेंज होके करेक्टर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है. सो ये कोर्स कर लेगा. उसके बाद अगर हम इससे पूछें कि व्हाट इज एक्स, द टाइप ऑफ एक्स, सो इट विल गिव अस करेक्टर्स. ये खुद ही ऑटोमेटिकली कोर्स कर देगा चीजों को, ठीक है. एम आई क्लियर? Okay, so what is coercion in R? So when one call a function with an argument of wrong type, R will type to coerce value to a different type so that the function will work. So for example, x is equal to c, sorry, wait. Okay, so x is equal to create 1 2 3 4 5, and then we ask from the tool from R what is x. So it answer us that x is equal to 1 2 3 4 5. Now we ask type of x, what is type of x. So it answers us double, like that means numeric. And now we write class of x, so that is numeric. So let's change the second element of the vector to the word hat. So if we replace the second element with hat, R will change the object class to character and change all the elements into vector in the vector to character, char, and character, that means character. So that means if we change like we ask the tool to change the second element that equals to hat. So now we ask what is x now. So it answers us 1 hat 3 4 5, and these inverted commas, that now these are not inverted commas, these are in inverted commas now, because it coerces the whole stuff. And and now when we ask type of x, so it will call that as character, and class of x, that will it turn it into characters rather than numeric. Am I clear or not?
अच्छा, शफीक, now it's practice time आप शेयर कर दें. ओके सर. यस सर. अच्छा, अब लिखें x इज इक्वल टू क्रिएट 1 2 3 4 5. x इज इक्वल टू, ठीक है, क्रिएट 1 2 3 4 5 कॉमा कॉमा 2. देना. यस, कॉमा देने हैं, कॉमा देने हैं, कॉमा दें 1 2 3 4 5. हाँ, ठीक है. और अब इंटर प्रेस करें. अब इससे पूछें व्हाट इज x, सिर्फ x लिखें. तो ये अब आंसर दे रहा है कि ये क्रिएट हो गया होगा. ठीक है. नाउ अब लिखें टाइप ऑफ x, या लिखें क्लास ऑफ x. क्लास x लिखें, क्लास ब्रैकेट में x लिखें, ब्रैकेट में x लिखें. इंटर प्रेस करें ताकि यह हमें क्लास बता दे. तो ये है, क्या है, न्यूमेरिक. तो द x में जो भी है वो न्यूमेरिक है. अब आप एक काम करें कि यहाँ पे लिखें कि सेकंड नंबर एलिमेंट को हमने चेंज करना है. सो x लिखें, x और ब्रैकेट, नहीं ये वाली नहीं, ये पेरेंथेसिस है ना. स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट. ओके सर. हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखें और बाहर लिखें, हाँ, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू लिखें, नहीं इज इक्वल टू, हाँ इज इक्वल टू, इज इक्वल टू हैट लिखें और कॉमा में बंद करें, हैट, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करें, हैट लिखें, HAT, और इंटर प्रेस करें. ठीक है. अब हमने इसको कह दिया है कि जो सेकंड नंबर एलिमेंट है ना, ये 2 सेकंड नंबर एलिमेंट है, इसको हेड से चेंज कर दें. अब आप लिखें x, इंटर प्रेस करें. अब ये बता रहा है कि x 1 2 3 ये सारे बता, सेकंड नंबर एलिमेंट को इसने हेड से रिप्लेस कर दिया है. ठीक है. अब Yes, sir. लिखें क्लास ऑफ x, लिखें क्लास ऑफ x ताकि हमें पता चल जाए कि क्लास अब क्या है, क्लास और x. हाँ, तो देखें अब पहले जो है क्लास ऑफ x was numeric, now the class of x is character. So this is how the R coerce things. This is easy, but Let me recap what we have studied before, like data science, and we were actually talking about R basics in the data science and the application of R basics. And actually what data science is to collect, clean, integrate, analyze, visualize, and interact with data to create data products. So basically we study like we more often face different things like to use in data structure, and that is the first of the definition is vector, and we use vector too much often in data structures and in data science. And what is actually vector is actually one-dimensional representation of string of similar entities. So the first of the thing is one-dimensional, and that is a string of, that is not one entry, and what one entity, that is like combination of entities, and they need to be similar. So similar one-dimensional string. And the example could be like if A is a vector, so A is a vector, and that A will have like the names of cities or numbers, or so this is actually a vector. Now if we compare that with a list, so a list is also one-dimensional, that but that will contain a mixture of different types of data, like
to London and yes. So C is a list now. C is not a vector because it has mixed type of data. So the 2 is actually the number. This is and this is a string, and yes, yeah, or no is actually, that is a logical statement. So this is a combination of different data. So that is now a list, and this is one dimensional, and this is also one dimensional. So the difference between this is the difference between a vector and a list. Similarly, if that is not one dimensional, but if that is if the data is two dimensional or more than two dimensional, like n dimensional, so but the data is one type, so that will be a matrix. But if the data is of multiple types or a mix of different types of data, that will be called as a data frame. So a table could be a data frame if that contains a mixture of different data types. R is a programming language and a software environment. So R is a language as well as a software, and it is used for statistical analysis, graphical representation. We can also use R for graphical representation and reporting. So this is just like if we use Excel we can use for graphical representation, for statistical analysis. We can use Excel as well, but it has more like it has more Vista, and in the application it is also a language as well. So okay, and R was, we have talked about this, why the name R is, and because of the scientists, or maybe because of the conventional program that's S, and after that it's R, and that's it. So how to install R. So first we need to install the R package from CRAN, from this comprehensive R archive network. So first we need to install this one, and after that we need to install this one. So this is R Studio. So first we need to install R, and then we need to install R Studio, and after that so this must be installed before this one. And after this, we have talked about some function, the difference between function and objects. So we have talked about that in detail. So everything that has the parentheses, that will mean that's a function, and a function of so the mean is a function if that is the parenthesis is there. So that's noted by function. We also have talked about arguments. So everything in between the parentheses will be arguments. And R is very object oriented as well. So all entities in R are objects, and we call, for instance, if this is a function, so we name this function like mean of X is equal to mean of this. Now this is function. This is not function. This is just a name. So we have make it equivalent to the function of X. And so every time we call mean of X, it will calculate the mean of X actually. And after that we have the object like stuff stored in R, and there is a sign that is accessor. So accessor is used to access data from the columns of a data frame. If we have a data frame, like if we have a data frame, like if we have a table and some data, and that data has different columns. So and this is column number 1, that is serial number, column number 2, that is column number 3, that is 4 and 5. So if we want to get the data from this column, from this data, so we will use the sign, this dollar sign, and this dollar sign we will not call is dollar, we will call it accessor, means to access this column. So if the name of this table is like, if this is names of cities, so I like if this the name of this table is cities, so I will write cities. So I will call it like go to the table cities and access me the
this column. So if I write this thing, so this will mean the column, the table cities, and go into the column to the column this 3. And after that I have some argument regarding that, like to search the least numbers for me or the highest number for me from this column. So that will be the rest of the argument. We will be talking about this in detail, but this is how we use the signs in R. And after that we have talked about vector. A vector could be numeric, a vector could be characteristic vector, a vector could be logical. And a class is actually the type of the object, and this is operational relation operator, and this is actually this is equals to. That will mean we are asking from the R program either the statement is true or false. So if I ask the from R either 3 is equivalent to 2. So that will not mean I am telling the R that 3 is equal to 2. Actually, this means I am asking from R either this is true or this is false. So it will give me the result either this is true or false. If I write it as 3 is equals to 2, so that will mean I am making two things equivalent. So next time the R will consider 3 as equals to 2. But if I write 3 is equal to 2, that will mean I am asking from the R either it is correct or not. So it will give me the result as like false. Or otherwise, if that is true, that it will give the true. So this is how this operator is used, this sign is used. And so these codes are actually, they denote characters. So if I write 2, so and I ask from the R what is the type of this, so it will tell me that it is numeric. It is a number, it is numeric character, but it is numeric, sorry, it is numeric. But if I use the sign, the code signs, so it will consider this two not as numeric, it will consider this as a character. So if I ask from R what is the type of this, so it will call it as character, char. So it is some character. It will not calculate, like it will not add to, for instance, I want to add to sum up this character, this numeric with 3. So it will, if that is this numeric, it will be added. But if that is in the comma, it cannot be added with 3, because comma, in the comma, it will not be a numeric feature. It will be something like character, like it will not be considered as digits. It will be considered as 2, and not, it will not be like 2, 1 plus 1. It will not be like that. So I think I'm clear with that. And rest is we have also talked about sort, order, rank, and like in detail the index of like the original. So and then here we create a vector, that we create a vector like x is equal to create 31, 4, 15, 92, and 65. We first create that, and then we ask R to sort this x. So this was actually, we asked from the R what is x. So it gives the actual the whole like the set of digits. So and after that we asked R to sort this for us. So it then sort this for us. Sort is actually the actual numbering in the ordered form. Like this 31 could be at this 31 is like this is at 4th position. So and sorry, this actually sort this thing for us. So it is in the ascending order for us. It
sort it in the ascending order. And actually order is actually this order, this 4 is at number second, so it is actually the index of this sorted data, and rank is the index of the actual data when it is so this is the difference between the order and the rank. So order and rank are actually the order and rank are actually the index of the this order is the this sorted data, and this is the index of this data. We have talked about previously in detail about this. And after that, coercion is actually when there is some conflict in some statement. So rather than going into the detail and complicating things, R will stop there. But R to come up with some solution, R coerce things. Like if that is if there is a hat in if we write at number second position, if we write hat, and hat is actually a character, so here it is numeric. But if we write hat, so it will consider the whole statement, the whole set as characters, not numeric. So here in this way, it coerces things rather than like going into into the like in details and going and instructing the software. So and after that, we have to install some codes. Um, Noreen, are you there? यस सर अभी इंस्टॉल हुआ है आप चेक कर लें तो G, please share. G, go to start. Yeah, this is actually what it is. So first class, please try to note that if you write, if you want to close this window, this setup, this environment, so just write Q and the bracket, these brackets. Like if you write, wait, I need to write it for you. So if you write this thing, it will quit the whole thing, or just to quit, or so that like just write Q and the brackets and it will quit the environment. So please write Q and brackets and press enter. Yeah, so it's closed now. So again, open it. This is how we can close the program. So now we are in the environment. So here you can see the console. We should write in the console, and here the result will appear in this environment. So and these are the packages that we do have here. So now to start with, please now we need to install some libraries. We need to install the libraries, and the libraries are there are some packages actually, and the packages actually have data, and we need to access the data in those packages. So for that, so right, so first of all, I uh, I want to let you know to like so if we need to know one thing. If we write hash, if we write hash, and like we need to write hash and installing, we write, if we write install, like if Nori, please write hash hash and then write installing the DS lab package, installing the DS lab, small DS labs इकट्ठे ही लिखें, labs and package. So and press enter.
it will not execute anything, because this hash means this is for our own understanding. If we come across this after a year or two, we need to know why we have written the code after this. So now write install dot packages, install dot, हाँ ये नीचे आ रहा है ना, इसको क्लिक करें, हाँ फर्स्ट वन, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, और इस ब्रैकेट में लिखें हमने कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना हो ना तो इंस्टॉल डॉट पैकेजेस उसका कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखें इन्वर्टेड कॉमर्स में ds labs, ds labs, ds labs, नहीं इकट्ठे लिखें। हाँ अब देखें इसको थोड़ा सा, पूरी क्लास इसको समझ लें। ये पहली वाली स्टेटमेंट जो हमने लिखी हुई है, इसका ये मतलब है कि ये हमने अपने लिए लिखा हुआ है हैश टैग के साथ, आर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सेकंड जो है, ओके जो सेकंड लाइन है वो एक्चुअली इंस्टॉलेशन ऑफ द पैकेज है। सो अब इंटर प्रेस करें, yes this will install the package, ठीक है। अब ये अब पैकेज को इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। सर ये एक पैकेज है या ये सारा एक ही है? ये एक ही है, ये खुद ही करता जाएगा, ठीक है। सो इनिशियली हमने जब हैश टैग के साथ किया था ना, तो आर ने कोई काम उस पर नहीं किया, बिकॉज अगर हम इस पूरे उसको दोबारा अगर एक साल बाद भी देखें तो हमने ये कमांड क्यों दिया है, तो उसके ऊपर हमने लिख दिया था कि हम इंस्टॉल कर रहे हैं इस पैकेज को, ठीक है। तो हमने अपने लिए खुद अपने लिए लिखा था कि हम अगर बाद में देखेंगे तो इस कोड का हमें पता हो कि ये कोड हम क्यों लिखा हुआ है कोड को, ठीक है। और सेकंड जो है वो एक्चुअल पैकेज है, तो ds lab पैकेज जो है वो हमने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अब ये जो स्क्रॉल डाउन है इसको ऊपर ले जाएं, ये स्क्रॉल अप करें, स्क्रॉल अप कर लें, जाएं। हाँ ये देखें, अब जो फर्स्ट लाइन है वो हमने अपने लिए लिखा था। अगर बाद में हम देखें इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और ये ds labs है, अगर हमें इसकी समझ ना आए, मीन्स कि ये तो बहुत सिंपल है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कोड्स भी बाद में आ सकती हैं, सो उसके ऊपर हमने अपने लिए कोई हिंट दिया हो कि हम ये क्यों कोड नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। सो वो नीचे हमने फिर वो कोड लिखा हुआ हो, तो आर उस कोड को इंस्टॉल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब दोबारा जाएं अपने एंड पे जी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने पैकेज को इंस्टॉल कर लिया है, उससे हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। सो अब आपने लिखना है हैश टैग लिखें, हैश टैग loading the ds lab package, loading the ds lab package, the ds labs package into the R session, the R session, ठीक है। सो अब हमने इसको और इंटर प्रेस करें, इसने कुछ नहीं करना, हमने ये अपने लिए लिखा हुआ है कि अब हम जो है वो ds lab पैकेज को लोड कर रहे हैं। हमने तो इंस्टॉल कर दिया ना, तो अब हमने लोड करना है। तो अब अगर हमारे पास मल्टीपल पैकेजेस हैं, लाइक इंस्टॉल हुई भी हैं, तो हमने उसको लोड करने की ज़रूरत होगी। लाइक एक पैकेज को हमने लोड कर दिया, उसको यूज़ करके, उसको बंद करके, फिर किसी और को लोड करके, दिस इज़ जस्ट लाइक हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, लेकिन हमने लोड एक को कर लिया ताकि उसमें काम कर सके और फिर दूसरे को काम कर सके, इस तरह, ठीक है। सो अब हमने इसको लोड किस तरह करना है, लिखे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, हाँ ये ऊपर आ गया ना, ठीक है। हाँ इसको क्लिक करें लाइब्रेरी, और हाँ अब आपने इसके अंदर लिखना है ds labs। तो ds lab ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, तो अब हम इसको कह रहे हैं कि लाइब्रेरी में ds labs को अब लोड कर लें लाइब्रेरी से। अब इंटर प्रेस करें,
ठीक है, एंड दैट इज लोडेड नाउ. सो अब अगर आप अब हमारे पास इसमें कुछ डेटा ऑलरेडी है जो हमें अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वी ऑलरेडी वेल नो कि इसमें एक टेबल है, हमने उस टेबल को डिस्कस करना है. उस टेबल का नाम है मर्डर्स. ठीक है, MURDERS लिखें यहाँ पे. मर्डर्स का एक टेबल है. वी हैव a data frame of murders. सर मर्डर्स लिख के एंटर कर दूं प्रेस? हाँ, वेट कर लें, वेट, लेट मी चेक. So we have a data frame of murders within this library, within the DS labs. So we need to access that data. अब इंटर प्रेस करें. So ये डेटा है, ठीक है. अब इसमें कितने कॉलम्स हैं? हाँ, ठीक है. So अब हमने मर्डर्स को क्लिक किया ना, ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाए. हाँ, बस, ठीक है. अब मर्डर्स को हमने क्लिक किया. सो अगर आप यहाँ पे देखें, हमने मर्डर्स को इंटर प्रेस किया तो हमारे पास पूरा टेबल आ गया. फर्स्ट इज द सीरियल नंबर, सेकंड इज यूएस स्टेट्स. ये यूएस के स्टेट्स हैं, ये इसकी एब्रीवेशन है, ये इसकी एब्रीवेशंस हैं. ये जो है रीजन है, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सो नॉर्थ सेंट्रल, एंड दिस इज द पॉपुलेशन. The population of these cities, and this is the total number of murders in these cities. So ये टेबल जो है ये murders का है, और इसमें इन cities में like how much murders are reported from these states, actually cities, no, states, from these states. So now I want to know which state has maximum murders. So अगर if this table is too much extensive, if this data frame is too much extensive, I don't want to go into the detail of everything. We will just like put the codes, and it will give us the answer for that. So for that, just go at the end. Yeah, wait, and write write murders, accessor, डॉलर का साइन, नहीं, डॉलर का साइन लगाएं accessor की जगह. accessor is actually डॉलर, एंड उसके बाद स्टेट लिखें. स्टेट, we need to access the state. ये ऊपर आगे इसी को क्लिक कर दूं? इसी को क्लिक कर लें, और उसके बाद ब्रैकेट, नहीं, ये वाली नहीं, these are parentheses. Yeah. फिर कौन सी? ब्रैकेट्स जो हैं, और कौन सी ब्रैकेट्स? ये वाली? एक नहीं, ये भी नहीं, आप इसको डायरेक्टली कर लें. हाँ, आपने शिफ्ट के साथ किया ना? यस सर. हाँ, ये? yes, exactly. Okay, and then write which dot max dot WHICH है, ICH dot max MAX, फिर parenthesis. ये वाली? नहीं, इसके अंदर ही, मैक्स के बाद parenthesis. हाँ, नहीं, parenthesis है, ब्रैकेट नहीं है, parenthesis. स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, parenthesis है. हाँ, parenthesis ठीक है ना, आपने अब ठीक डाले हैं. नहीं, स्क्वायर parenthesis, yeah, exactly. And after that, murders, फिर accessor का साइन. हाँ, और फिर population. सर ये पॉपुलेशन के? एग्जैक्टली. अब हम ये पूरी स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हैं? वी डोंट नो दिस. ठीक है. सो अब ये जो मर्डर से पहले जो है, आप क्लिक करें. इसको एंटर क्लिक कर दूं? नहीं, एंटर प्रेस ना करें.
इंटर प्रेस ना करें इसका। अब इसको पहले समझ लें, हम पहले इसको आर को हम कह रहे हैं कि अब मर्डर्स उसमें जाएं, लाइक मर्डर्स डेटा फ्रेम में जाएं, मर्डर डेटा फ्रेम में स्टेट, नहीं नहीं ये नहीं, उसी को दिखाएं, उसी लाइन को, हाँ, मर्डर्स के डेटा फ्रेम में स्टेट जो कॉलम है वहां जाएं, उसमें विच मैक्स मीन्स के हमें आपने इसने बताना है कि मैक्सिमम क्या है, और हमने क्या मैक्सिमम पूछना है, मर्डर्स के टेबल में मींस के मर्डर के डेटा फ्रेम में पॉपुलेशन, सो मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला स्टेट जो है वो हमें बता दें। ठीक है, सो अब ये मर्डर से पहले क्लिक करें, मैं चाह रहा हूं कि हम हैशटैग के साथ इसको लिख दें, क्योंकि बाद में जब इसको देखेंगे तो इसकी समझ नहीं आनी। ठीक है, इसके साथ प्रेस इंटर प्रेस करें, हाँ यहाँ पे इंटर प्रेस करें। अच्छा नहीं ठीक है, इसने रिजल्ट दे दिया कैलिफोर्निया। अब ऊपर वाले टेबल में जाएं, हाँ यहाँ पे जाएं, इसमें देखें कि पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला रीजन जो है वो कैलिफोर्निया ही है। पॉपुलेशन देखें, ठीक है, पॉपुलेशन जो है हम ये पूछना चाह रहे थे इससे कि विच ऑफ द स्टेट हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसने डायरेक्ट निकाल दिया, बजाय इसके कि हम पूरे टेबल को देखें। हो सकता है हमारे पास ये डेटा फ्रेम जो है दैट इज टू मच एक्सटेंसिव। ठीक है, सो इट गिव्स रिजल्ट डायरेक्टली इफ वी हैव द कोड्स। ठीक है, अब एक और लिखें, और हाँ हैश टैग लिख, और नहीं हैश टैग हैश साइन, यस हैश साइन, और फिर उसके बाद लिखें हाउ टू ऑब्टेन द मर्डर रेट, हाउ टू ऑब्टेन द मर्डर रेट ब्रैकेट में लिखें दैट इज मर्डर्स फॉर एवरी 100,000 पीपल। नहीं उसमें लिखें, पैरेंथेसिस में लिखते हैं हाउ टू ऑब्टेन murders for every 100,000 people। नहीं उसको डिजिट में लिखें, या 100 लिखें, 100 फिर कॉमा 3 zeros लिखें, 3 जीरो नहीं 3 zeros और ऐड कर दें इसके साथ। हाँ ये 1,000 हटा दें, मीन्स के हाउ टू ऑब्टेन मर्डर्स इन 1 लाख पीपल, स्पेस पीपल लिखते हैं, हाँ ठीक है, तो पीपल लिखते हैं और इंटर प्रेस करें। सो अब आर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा बिकॉज हमने यहाँ पे हैश लिखा हुआ है आगे। ठीक है, सो ये हमारे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब एक चीज को समझ लें, अब ये ऊपर डेटा फ्रेम को दिखाएं थोड़ा सा, बस ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हम लाइक अगर मैं खुद चाह रहा हूं कि आई इमिग्रेट टू सम ऑफ द यूएस स्टेट, सो बट आई वांट पीस देयर। सो अगर मैं कैलिफोर्निया में देख रहा हूं कि कैलिफोर्निया में डेथ रेट बहुत ज्यादा है, डेथ्स बहुत ज्यादा है 1257, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस टोटल के बेस पे लाइक इफ आई रिलाई ओनली ऑन दिस, सो दिस इज नॉट लाइक द रियल situation because it is in the context of population as well, population भी उसी तरह ज्यादा है। like अगर हवाई देख लें, हवाई has only 7 deaths हैं हवाई में, ठीक है, और इसके कंपैरिजन में कैलिफोर्निया में 1257 डेथ्स हैं। ठीक है, सो यहाँ से हमें लग रहा है कि कैलिफोर्निया में डेथ्स बहुत ज्यादा है, बट एक्चुअली वी हैव द टोटल डेथ्स, वी नीड टू नो द डेथ रेट। अगर हमें पता चल जाए बिकॉज द पॉपुलेशन इज डिफरेंट, so we need to know the death rate and we need to add a column with the death rate actually। so death rate के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा स्टेट जो है वो सेफ है। ठीक है, यहां से हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी स्टेट जो है दैट इज सेफ। ठीक है, समझ आ रही है? सो गो लाइक
इन द सेम, हाँ यस। यहाँ पे आपने अब क्या लिखना है, यहाँ पे अब लिखें मर्डर अंडरस्कोर रेट, मर्डर अंडरस्कोर यस रेट। अब हम RATE, अब हमने मर्डर रेट को मालूम करना है, तो ये हम खुद ही नाम दे रहे हैं मर्डर रेट, या MR लिखते हैं या जो भी है, सो मर्डर रेट इज ओके, ठीक है। मर्डर अंडरस्कोर रेट और इज इक्वल टू, इक्वल टू का साइन कि इक्वल टू? इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन। नो, आर में हम ये वाला इक्वल टू साइन नहीं लिखेंगे, इवन दो ये काम कर जाता है, लेकिन हमने ये वाला साइन यूज, ये वाला साइन हमने यूज नहीं करना। इक्वल्स टू, हाँ हमने ग्रेटर देन, ग्रेटर देन नहीं 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 नहीं, इज लेस देन का साइन कर दें, लाइक अगर आप उस तरह पढ़ रही हैं तो हाँ, और डैश स्पेस दें। So this is actually equals to, this is the sign for equals to, ठीक है। R will understand this as equals to, समझ आ रही ना? यस सर। ठीक है, अब आप लिखें मर्डर्स के, लाइक हम R को कह रहे हैं कि इसने मर्डर्स के डेटा फ्रेम में जाना है, और अब एक्सेस करें, एक्सेसर, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। और टोटल, हाँ टोटल कॉलम में, टोटल कॉलम को एक्सेस कर लें, ठीक है। मर्डर्स जो है वो टोटल वाले कॉलम को एक्सेस करें, मींस टोटल मर्डर्स, ठीक है। और डिवाइड बाय स्लैश, स्लैश का साइन करें, स्लैश साइन, हाँ दिस मींस डिवाइड। सो टोटल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मर्डर्स, दोबारा मर्डर्स लिखें, मर्डर्स के डेटा फ्रेम में एक्सेसर लिखें, एक्सेसर, हाँ पॉपुलेशन, और मल्टीप्लाई, ये 8 का निशानी 8 जो है वो, हाँ नहीं नहीं इसको शिफ्ट के साथ करें, हाँ मल्टीप्लाई 100,000, 100,000, 100,000, ठीक है। अच्छा अब इसको देखें, यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं कि मर्डर रेट को आर हमें इक्वल कर दें किसके, मर्डर्स के डेटा फ्रेम में जाके टोटल वाले कॉलम को उसको डिवाइड करें मर्डर्स वाले डेटा फ्रेम में पॉपुलेशन पे, और पॉपुलेशन को ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई किया हुआ हो 100,000 में, तो इसने हमें मर्डर रेट देना है, और मर्डर रेट क्या देगा कि फॉर एवरी 100,000 पीपल how much murders are there in every of the row, in every of the state, in every state। इसको इंटर प्रेस करें, ठीक है। सो अब हमने मर्डर रेट को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। ऊपर जाएं थोड़ा सा, इस डेटा फ्रेम को दिखाएं। इसमें हमने ये देखा था कि टोटल वाला कॉलम, टोटल कॉलम जो है इस, ये टोटल मर्डर्स हैं, सो इसको डिवाइड करें पॉपुलेशन पे, और पॉपुलेशन हमने 100,000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। सो ये हमें क्या देगा, मर्डर रेट दे देगा, समझ आ रही है? ठीक है, अब नीचे जाएं। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया है, अब इक्वल्स, हमने इसको कह दिया कि इसको इक्वल्स टू कर दो, ठीक है। अब आप क्या करें, अब आप मर्डर रेट लिखें, यहां पे मर्डर अंडरस्कोर रेट लिखें, मर्डर अंडरस्कोर रेट, हाँ ऊपर आ रहा है, ठीक है। इंटर प्रेस करें, हाँ। सो इसने क्या दे दिया कि मर्डर रेट दे दिए कि तमाम जो जितने भी सिटी, जितने भी वो हैं स्टेट्स हैं, 51 स्टेट्स हैं ना, ऊपर लिखे हुए ना 51, तो इन 51 स्टेट्स में मर्डर रेट क्या क्या है, ठीक है। इसे नंबर वाइज लिख दिए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 अप टू 7, और फिर 8 जो है वो दूसरे रो से शुरू है अप टिल 51, समझ आ रही है? इसमें भी ये 51 टोटल स्टेट्स हैं, समझ आ रही क्लास? यस सर, अच्छा आ रही है। ठीक हो गया। अब आप लिखें हैश,
hash how to ordering the state by a murder rate, ordering the state by murder rate, in comma लगाएं comma, in decreasing order, in decreasing order, decreasing order. अब यहाँ पे ये ऊपर वाले जो हमें जो रिजल्ट आया हुआ है ना, ये मिक्स है, मीन्स के ये 2 यहाँ पे आया हुआ है, इसके बाद 4 है, फिर दोबारा 2 आए हुए। सो हम इसको क्या कह रहे हैं कि ऊपर जाए, ये डेटा फ्रेम दिखाएं। यहाँ पे जो स्टेट का जो वो है ना कॉलम, इसको हम कह रहे हैं कि आर को हम कह रहे हैं कि जो स्टेट का कॉलम है ये हमें मर्डर रेट के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो। ठीक है, नीचे जाएं। हम क्या चाह रहे हैं, ऑर्डरिंग द स्टेट बाय मर्डर रेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। उस कॉलम को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं मर्डर रेट के हिसाब से। इंटर प्रेस करें, इट विल नॉट एग्जीक्यूट एनीथिंग बिकॉज देयर इज हैश देयर। अब हम इसको कोड भी देना चाह रहे हैं कि कोड क्या दें। आप लिखे मर्डर एक्सेसर स्टेट, ये आप जो है मर्डर्स कर दें क्योंकि इस डेटा फ्रेम का नाम मर्डर्स है। ठीक है, मर्डर करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मर्डर्स एक्सेसर, हाँ एक्सेसर स्टेट, ठीक हो गया, ग्रेट। एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद ऑर्डर लिखें। ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर और उसके बाद पैरेंथेसिस, यहां पे मर्डर अंडरस्कोर रेट, अंडरस्कोर रेट कॉमा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इज इक्वल टू, ये ऊपर आ रहा है उसी क्लिक कर दो। हाँ ट्रू लिखें, ट्रू TRUE, कैपिटल कैपिटल, हाँ ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। सो अब इसको, इसका क्या मतलब है कि मर्डर के डेटा फ्रेम में स्टेट के कॉलम में जाके ऑर्डर करना है, मीन्स के तरतीब से करना है। किसको, मर्डर रेट को। मर्डर रेट ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है कि क्या है। ठीक है, और फिर हमने उसको लिखा हुआ है कि डिक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू, मीन्स के डिक्रीज कर दो। दिस इज हाउ दिस कोड इज रिटन। ठीक है, अब इसको इंटर प्रेस करें। अब ये अब एरो की जो है वो प्रेस करें, एरो की अप वाला एरो की जो है ना, अप सही, वाला हम एरो, मर्डर के स्पेलिंग गलत है। हाँ बिल्कुल, अप वाला एरो की डाउन और अप वाला एरो की प्रेस करें। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ठीक नहीं होगा। अब जहां पे है ना वहां पे एरो की प्रेस करें, ये कमांड दोबारा आ जाएगी। एरो, हाँ, जो अप वाला एरो की है या डाउन वाला एरो की, नहीं नहीं नहीं, एरो की, एरो की। कीबोर्ड में एरोज, एरोज है ना, 4 एरोज हैं, 4 एरोज आर देयर, वो क्लिक करें। हाँ, यहाँ पे अब मर्डर को ठीक कर दें। यस सर। ठीक है, अब दोबारा पूरा सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। आप एरो की अगर कर लेना तो जितने भी आपने पहले कमांड दिए हुए वो सारे आते जाएंगे। ठीक है, अब इंटर प्रेस करें। ठीक है, अब इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। ठीक है, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया, मीन्स के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया हैज मोर, और यहाँ पे हवाई, न्यू हैम्पशायर और वर्मोंट, तो ये जो है ये सबसे कम मर्डर रेट है, और कोलंबिया और लुसियाना और ये यहाँ पे मर्डर रेट ज़्यादा है। ठीक है, सो इसने हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे वो दे दिए हैं स्टेट्स। समझ आ रही क्लास? यस सर। हाँ, उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे लिखे मैक्स, मैक्स एम ए, हाँ मैक्स लिखे, मैक्स।
हाँ ठीक हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि कौन से स्टेट में मर्डर्स ज़्यादा हैं, मैक्स मर्डर्स और एक्सेसर पॉपुलेशन। इंटर प्रेस करें। हाँ, तो ये हमें वो डिजिट दे रहा है कि इतने मर्डर्स हैं सबसे ज़्यादा किसी स्टेट में। पॉपुलेशन ये क्या करेगा कि पॉपुलेशन वाले कॉलम में जाके तो वहां से वो डिजिट उठा देगा कि ये वाले जो है ये सबसे इतने मर्डर्स हैं सबसे ज़्यादा जो किसी स्टेट में रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है, समझ आ रही है? Talked about like this is exactly equals to, this is not for not, this is for not equals to, this is for the pipeline sign, and this is for or, and this is for and first we have defined this index. If you are working with the murders data frame, and that was in the okay, so that was in the DS Lab packages. And if you have installed the DS Lab package, then you can work with this. So you have to define first the index, and after that you have to define the like murder rate, and murder rate should be equals to, it should be less than 0.71. So we have defined that murder rate must be less than 0.71. So after that we call it like murders, and that access the state, the state column, and then the index. So it will give all the states with murder rate less than 0.71. And after that sum of the index, so all of the index will be sum up, and that is 51. So all murders in all the states that is less than 0.71 are 51. And now we defined west, and west is equals to murders, and that access region, and is equals to that will means, and the region must be like exactly equals to west, this west. So now safe, we need to define the safe, and safe will mean the murder rate less than or equals to 1. So actually why we are using it, because we want, like we have the table, and that table was like that data was about the murder rates in different US states, and like one column was the region. So region was like west, south, and like different, like north, and like this. So we need to define, like I need only those states that is in the west, or and like I need to have the murder rate. So murder rates are, so that they need to be less r, and so less r less r equals to 1. So so like in west, so and plus those states that is like less than 1. So that will mean like 0.99 or something else. So all those states will be, so it will, so if I then like write murders, so if I write murders and access state, so if this is the state, the names of the states, so like access me to the states, so it will access this state, all these states with the defined in index. So that will be, the index is actually safe and west. So safe is actually the murder rate should be less than 1, and west is, so this is west, also west, so west is in the west, like W. So it will give me all those states that is both safe as well as in the west. And we have defined safe, and we have defined west, that means this west, like that means this west actually. Am I clear or not? So when you compute it with your own system, you will know how it works. And after that, these are some entries, like if we want to know which and after that, this is a function, so that this function
will give us the entries of logical vector that are true. So and match is actually looks for entries in a vector and returns need to access them. So this is coming, there are certain examples for that, and we will be talking about this. And this sign is actually if we want to know whether or not each element of the first vector is in the second vector or not. So if we want to know the element within the first column, the element within the first column that is part of the second column or not, so we use this sign. And after that, to determine the murder rate in like Massachusetts, we may do the following, like in a single state, if we want to know the murder rate, so like how we can define. So in IND, so I define it like IND, which murder state. So in this murder table, it will access the state, and that is exactly equals to Massachusetts. So that will mean this is in the inverted comma. So that will mean it will exactly like which state, murder state is equals to Massachusetts. So what it will give? It will it will give the murder rate in Massachusetts actually. And it will define this. We will define this index first, and after that, once we define it, then we can define the murder rate and the murder rate in Massachusetts. So if we write like this, it will give us the murder rate in Massachusetts. Like this is how we can like first define the to access that region, and then we need to go for murder rate and that index, and it will give the IND, and that will give the index of the same thing. And to obtain this is how we can use match. This the match, this looks for entries in a vector and returns the index needed to access them. So like if we have to define like IND is equal to match, and match is we need to create like New York, Florida, and Texas. We have defined this, we have created this, and after that we need to access the state within the murders. So a state within murders. So it will like if we write index now, so it will give us the index of all these, so that will be in the state. And after that, we can know the murder rate in all these regions. And to see if Boston, Dakota, and Washington are states, so just like create Boston, Dakota, and Washington, and it will access this this is pipe. This is actually, this sign is known as pipe. This percent in and percent. So percent in percent. So this sign is known as pipe. So this sign is known as pipe, and this is actually to access this thing. So within this thing, so there are certain examples for this, and all these will be using in another package, and that is the DP layer, and adding a column with mutate. So if we have a table, and that table has different columns, and if we and that means different vectors, and if we need to, if we want to add one more column, so if we want to add one more column, so we can add with a command known as mutate. So now if we have the data of population murders, so we can add another column with the name of like murder rate. मर्डर रेट्स के नाम से हम इसमें कॉलम ऐड कर सकते हैं. So we can add the column with murder rate and here, and with the command and that is mutate. So keep in mind that this mutate will only work with this package, with DP layer package. In the previous package, mutate command will not work.
And now the DS, so we can go again with the library, DS library, labs and data, murders, and that is mutate, murders, mutate, and murder, and that is the murders, and then rate, and that is equal to total divided by population into 100,000. That will mean mutate, that will mean add in the murder a column with the name of rate. So this will add mutate a rate column in the in this table, like in this table. Okay, so and after that, note the function mutate takes the data frame as first argument and the name and value of the variable in the second column. So you have to have in mind that the data frame must be the first argument. So the name of this table must be the first argument, and then after that the name and value of the variable. So this is the name and this is the value of the variable. So the name and the variable, this should be the second argument. So the first and second argument, they are separated by a comma. So this is how the function mutate can work. And this, now that this is this call, we use total population and so furthermore, we can use the command filter, and filter is murders rate is equal to 0.71. So we need to keep in mind the difference between filter and select. So what select will do, select will like it will select murders, so like if you want to select columns with select, so it will select columns. So if we want to select a column, so use select the command select. So new table, and we have defined this name, and that is equal to select. So in the select, the murder is the table. In the murder, select state, region, and rate. So select these three things. So filter, new table, rate is less or equals to 0.71. So now you have to keep in mind, so if we have a table and we want to select some column, so use the command select. This command will be used, select. But if you want to select some specific row, like row number 10, so if you want to select this row, like if this is row number 10, so this row can be selected with the command filter. So now what, first we need to select the column, and that column we have given that filter, this new table, this one, we have defined the table, and rate is equal to 0.71. So only those rows, select those rows that has value of less than 0.71, this one. So this is how the the select and filter command can be used. इसकी समझ आ गई कि नहीं? यस सर, आई है। दोनों में क्या फर्क है सेलेक्टर कमांड में? अब इसको देखें, एक तो पहले हमने डिफाइन कर लिया था कि पाइप ऑपरेटर जो है ये दिस वन, यूजिंग पाइप ऑपरेटर, इसको हम यूज कर सकते हैं सबसेट द डेटा बाय सेलेक्टिंग स्पेसिफिक कॉलम। स्पेसिफिक कॉलम्स को किस तरह सेलेक्ट करेंगे? यूज द वर्ड सेलेक्ट, जिससे हमें स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक रोज को किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं? बाय यूजिंग द वर्ड फिल्टर। सो जिसके थ्रू हम कॉलम्स और रोज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों को यूज किया गया है एंड चेक इट नाउ। मर्डर्स, और मर्डर्स के बाद जो है ये पाइप का ऑपरेटर यूज किया गया है, दिस पाइप। ये देखें, अब ये पाइप यूज किए गए हैं दो, ठीक है। अब इसके दरमियान जो चीज है ये इसको यूटिलाइज करेगा। अब देखें, सेलेक्ट करें किसको? टेबल में
means के data frame is a table actually. So select which columns, those columns with the name of state. So जो state है, state का column, region and rate. So select all these 3 columns and then filter all these that having the rate and that is less than or equals to 0.71. So it will select all those states and regions that are less or equals to 0.71. समझ आ रही कि नहीं क्लास? उसामा समझ आ रही है? मुंतहा? Okay, you are replying in the chat. Okay, ठीक है, माइक इशू है, नो वरीज, ठीक है. So ये जब आप अप्लाई करेंगे आपको उस वक्त समझ आने हैं, लेकिन एक दफा गो थ्रू कर लें. ठीक है मुंतहा, ठीक है, ठीक हो गया. You replied, okay. And so you need to just apply this on your own system and you will understand how easy is to using how easy using them is. And in DP layer, start with a data table. So when you use DP layer, so start with the data table and the results of the, so this is a DPLYR, not LYER, this is an LYR. And the results of the instructions with 2 notations like this pipe into filter. So filter functions take the data table. So if you can see this filter function takes the data table as the first argument and conditional statement as the second. We have talked about this before, like how we can use it, but this is how we can use all the stuff in one go, like using select, pipe and filter functions in one statement, in one code. So now if we want to know what are the headings, like if we don't have the table, the data frame, and then we need to know only just the headings of the table, like just the headings of the column. So for that we have we have a code, and that is heads, this head of the data frame, the murders. So head of the murders, it will give us all the headings of the columns. And next to it is like this use this and you will know how this works. Now the most important thing is exploratory data visualization, and this exploratory data visualization is perhaps the main strength of R. We can visualize we can visualize things, we can visualize our results in R. हम उसमें ग्राफ्स बना सकते हैं, इस R में हम अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं. एक और प्रोग्राम है D3. D3 is an interactive data visualization program language, may be more flexible and powerful than R, but D3 takes much more time to generate a plot. So therefore R is preferable. People do use R because it is less time expensive. And now Faiza, it's your turn. Share the your slide. Maybe it will work with you. Okay, that's good. So now write plot. Okay, so write x is equal to murders. It will not access actually. Okay, wait. Murders, लिखें murders. X is equal to murders, and that is access population, means to access population, access $sign.
$, yes, population divide by $100,000 और 1 मिलियन कर दे, एक और भी कर दें, 1 मिलियन डिवाइड बाय 1 मिलियन। यस, अब इंटर प्रेस करें। या इट इज नॉट एक्सेसिंग एक्चुअली, असल में इसमें हमने लाइब्रेरी को वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ, लाइब्रेरी इंस्टॉल ही नहीं हो रही ना। ओके, आप अगर इसको जब अपने सिस्टम पे करेंगे तो ये हो जाना, इट विल वर्क विद यू। बट नाउ फॉर प्लॉटिंग डेटा, okay, leave that, just check it out, like I'm sharing the slide. And so for simple scatter plot, you can use this function, plot function. For histogram, you can use hist and hist function, so it will draw the histogram. And box plot is another like function, and that will provide more compact summary of distribution than a histogram and are more useful for comparison. So box plot can be used. So a simple scatter plot of total murders versus population. So x, like we define x is equal to murders access to population divided by 1 million, and we defined y. So first we define x and then we define y. Y is equal to actually the murders data frame and then the access to the total. So it will be the population of a state divided by 1 million, and then y-axis, on y-axis there is the total column. So now we need to draw the comparison or the plot between x and y. So just write plot x and y and it will give you the result. And similarly, if you want to draw a histogram of murder rates, so just write hist and the murders data frame and access to the rate. So it will give like the histogram of murder rate. So if you give this command, so it will give the histogram of murder rates in different states of US. So it will give like the histogram. And after that, box plots of murder rates by region. So just box plot XY and box plot rate region. So it will access the rate and the region, and that is data is equal to murders. So it is how this command can be given. So do that and you will get the results. So for further resources, this is the R homepage. And for discussion, this is actually, if you have some problem, if you are facing some problem with R, just write your question on this discussion forum and people will do reply to